फिर बाद में आके उनको पता चला गया कि मालिक हमारे पैर में कुछ बांध रहा है। हाथी नहीं, ये खच्चर, हाँ, वही हाथी में गधा, डील करते हैं। गधा, अच्छा। चलो, कल हम ये देख रहे थे, आज इसके निर्वाण प्रकरण, योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। कल यही तो विचार कर रहे थे, जैसे संकल्प जनित नगर सृष्टि असंकल्प से लीन हो जाती है, वैसे ही विषय वेदना वेदन से जनित अहंकार रूप समस्त जगत सृष्टि अवेदन से चित्ती में लीन हो जाती है। कल हम यही देखे थे कि संकल्प से सृष्टि, जिसको दृष्टि सृष्टि पहले हम बताए थे, और संकल्प को खींच लेने से, नहीं संकल्प को वापस ले लेने से सृष्टि नहीं रहता है। तो इसी को हम कल देखे थे कि ये सब योग सूत्र के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध, भक्ति शास्त्र के अनुसार शरणागति या दो को एक में देखना, और कर्म योग के अनुसार अहंकारहीनता, सब चीज़ में एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से सब बताते हैं। और इसको हम कल भी विचार किए थे कि अहंकार रूप जो है मन, विषय वेदन से, विषयों का संबंध से ये जगत बन जाता है। और विषय का संवेदन अर्थात विषयों के साथ संबंध अगर नहीं रहेगा तो संसार नहीं, इसको समझना चाहिए। और वो जाते कहाँ, यही तो बात, जो है वो जाएगा कहाँ। हमारा सूत्र ये बताता है, कानून ये बताता है, जो है वो हमेशा के लिए रहेगा। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। जो है वो कभी नहीं मिट सकता है, जो नहीं है वो कभी नहीं हो सकता है, जो नहीं है वो हो नहीं सकता है। तो ये कैसे, फिर जब वो संसार है हम कह रहे हैं, वो नहीं रहेगा तो जाएगा कहाँ। उसके लिए उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे आँख को बंद कर देने से दृश्य रूप सब दिखता नहीं, जाता है कहाँ। और भी उदाहरण बहुत सारे हैं। एक कोई पूछा एक लड़का को, वो मोमबत्ती जलाया था, मोमबत्ती को बुझा दिया। तो बच्चा को पूछा, बेटा ये आलोक गया कहाँ, उजला कहाँ चला गया। जो मोमबत्ती को बुझा देने से जो अंधकार आ गया, यह अंधकार आया कहाँ से, आलोक गया कहाँ। तो बच्चा बड़ा चालू था, चालाक था, बोला जहाँ से आया था वहीं गया, आलोक जहाँ से आया था वहीं गया। मूल स्थान में चला गया, मतलब स्वयं ज्योति में लीन हो गया। स्वयं ज्योति जो हमेशा है उसमें चला गया वो। और आया कहाँ से, आएगा तो वहीं से आएगा। उसी को तो हम जता सर्वाणी भूतानि भवन्त्यादि जुगागमे, संसार शुरू होता है तो आता कहाँ से, वहीं से आता है, और जाता कहाँ, बाद में वहीं जाएगा। अच्छा, अब बताओ, और एक दूसरा उदाहरण है। आप जो कल हम विचार किए थे, क्या स्काई, क्या स्काई स्केपर, और क्या नहीं, स्काई स्केपर नहीं भाई,
क्या कहते हैं मनोराज्य, मनोराज्य में हम क्या क्या नहीं बताते हैं मानसिक। मैं कल स्वस्तिक आश्रम के बारे में बता रहा था। तो ये सब याद करने से मन के सामने आ जाता है। भूल गया तो वो कहीं जाता, कहाँ जाता है? वो उसी को कह रहे हैं चित्ती में चले जाता है। चित्ती मतलब वो जो पराशक्ति है, वो जब एक्टिव होगा तब उसको शक्ति बोलते हैं। इनएक्टिव रहेगा, काम नहीं करती है, तो वो परमात्मा का स्वरूप है। चित्त चित्त अगर काम कर रहा है तब तो संसार है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सब कुछ है। और काम ने करना छोड़ दिया, चित्तवृत्ति निरोध हो गया, तब उसी का नाम समता। और वो थोड़ा देर के बाद फिर परमात्मा स्वरूप बन जाता है। थोड़ा देर के बाद क्यों? क्योंकि पहले का जो एक मोमेंटम रहता है, एक गति का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। हाँ, वही तो, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? गति का एक आधार समझो। जैसे हमारे शाम काल को जैसे आलोक अचानक नहीं मिटता है, धीरे धीरे रात्रि में लय होगा। सुबह भी आलोक एकदम नहीं आता है, धीरे धीरे आता है, अंधकार धीरे धीरे जाता है। तो ऐसे ही है, सब स्लो प्रोसेस, अचानक कुछ नहीं होता है। वो जो हमारे सृष्टि हुआ वो भी ऐसे स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस होता हुआ भी वो अचानक भी है। कैसे? जब भावना शुरू हो गया, मतलब एक हम बहुश्याम दिखेगा। जैसे मैं मान लिया मैं किताब पढ़ूं तो किताब दिखेगा। तो किताब में क्या एक ही चीज, सारे चीज इकट्ठा पढ़ोगे? मन, आँख, अपना इंद्रिय तो एक के बाद एक को पढ़ेगा। तो सीक्वेंस है, प्रोसेस बन जाएगा। और अगर नहीं है, खाली सामूहिक एक नज़र में देखेंगे तो सारा होल टोटालिटी दिखता है। और बारीकी से अगर उसको देखना चाहोगे तो एक एक अक्षर को देखना पड़ता है। तो सृष्टि भी ऐसे ही है। तो उसको हम वर्णना जब करते हैं वेद वेदांत में, पुराण में, जहाँ भी महात्मा लोग जैसे जो सृष्टि के बारे में अनुभव करते हैं, समझते हैं और बोलते हैं, वो ऐसा एक धारा से एक के बाद दूसरा बोलते हैं। तो पहले हिरण्यगर्भ हुआ, विराट या तेजस या जो जो कुछ कह के धीरे धीरे एक के बाद एक, ये सब माया का खेल, शक्ति का खेल। शक्ति किसको कहेंगे? स्वभाव को कहते हैं, नेचर को कहेंगे। बोलने के लिए हम कुछ भी बोलेंगे, एक के बाद दूसरा बोलना पड़ेगा। इकट्ठा सब तो बोल ही नहीं सकते, सोच नहीं सकते इकट्ठा, देख नहीं सकते इकट्ठा। इसीलिए एक के बाद एक, ये इसको कहते हैं प्रोसेस। एक क्रम है, क्रमानुसार होगा। तो इसको सृष्टि को भी ऐसे ही वर्णना किया गया। और लय होगा, जैसे सृष्टि हुआ था ऐसे ही लय होगा। जाएंगे वापस, जिस रास्ता से आप घर से आए हैं उसी रास्ता में घर में पहुंचेंगे, एक ही बात। तो अब दूसरा एक, ये जाता कहाँ? आपके सामने दर्पण है, दर्पण में आप क्या देख रहे हो? अपना प्रतिबिंब देखेंगे। दर्पण को हटा दो, दर्पण के सामने से आप निकल जाओ, या दर्पण को हटा दो या आपको हटा दो, अथवा दर्पण को तोड़ दो, अथवा अंधकार आ गया, तो वो प्रतिबिंब गया कहाँ? कहाँ से आया था, कहाँ गया? जहाँ से आया था, वस्तु से आया था, वस्तु में लीन हो गया। इसका मतलब वो नष्ट पूर्ण ढंग से नहीं हुआ,
जहाँ आलोक आ जाएगा, दर्पण आ जाएगा, तो प्रतिबिंब फिर दिख जाएगा। वो आएगा कहाँ से? वस्तु से आएगा, बिंब से आएगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इसी के लिए हम कहते हैं अनिर्वचनीय कुछ सही ढंग से नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक भावना मात्र है, कल्पना मात्र है, जो नहीं है उसको हम मान लेते हैं। प्रतिबिंब सचमुच नहीं है, लेकिन आलोक के कारण और ये जो प्रतिबिंब जिसमें दिखता है दर्पण, उसका स्वच्छता के कारण दिख जाता है। खाली दर्पण में नहीं, और भी कहीं दिखता है, पानी में भी दिखेगा, चमकीला पत्थर में भी दिखेगा, कहीं भी दिखता है। तो वो उसका कोई कारण सटीक नहीं है, सही कारण नहीं है, अनेक कारण मिल करके वो बन जाता है। इसी प्रकार दुनिया भी है, और दुनिया दृष्टि को हटा देने से, मन को दृष्टि मतलब इंद्रियों के माध्यम से मन जो देखता है, उसको हटा देने से, मन को स्थिर कर देने से सृष्टि नहीं रहेगा। मन ही बनाता है, मान लो मन ही बनाता, मन चुप हो जाने से बनाना बंद है। स्वामी जी, वस्तु और पदार्थ एक ही? हाँ, एक ही मान लो। पद का अर्थ पदार्थ, वस्तु जो है। मगर पदार्थ से वस्तु बनता है। जैसा आप सोचेंगे, पदार्थ वस्तु एक ही मान लो, अभी मान लो। व्यवहार के अनुसार अर्थ होता है भाई। Now we are discussing what we have discussed yesterday. Yoga Vasistha, last part, second half, and 33rd chapter. We are discussing on same subject, introvertness and extrovertness. And on this basis, if you project out or activate your senses through the mind or intellect, then you see the world. If you withdraw them, then there is no world. This is the point. If you withdraw the mind, there is no world. If you project your mind out, then there is world. What do we mean by this? The world is nothing but mental creation. And what is that? Again, analytically, if mind imagines something that appears before it with a name and a form. So what is mind then? Mind is nothing but a process, a vibratory process. And that vibratory system or energy or power, or we have named it in different ways by different persons from different angle of vision, by its actions, by its nature, by its appearance. Many things are considered and they have named it as such. The process is named. Just like the energy, we call it electricity also, we call it sound also, we call it light also, we call it magnet also. What not, we can, according to its situation, activation and result, everything is considered. So in this way, the process is seen differently, named differently, and understood differently. So it is nothing but basically everything is a process. That means a changing process. So if the change is not there, the result is not there.
That means change means thought waves. If thought waves go on wavering and having contact with some other objects or subject or anything, when one moves, then it has to have contact with other waves, isn't it? So, when the waves dash against each other, go on clashing, go on go and crossing against each other, then the outcome, the result, slowly it becomes solidified. Whatever subtle actions, when it is repeated again and again, in the course of time it becomes gross. Subtle becomes gross in this way only. When subtle anything and everything, whole world is nothing but vibratory system. If one wave is repeated again and again, that becomes gross. That is otherwise known as subject or object or something. And same wave, thought waves, they get contact with the object we say. Object also is nothing but waves. And in this way, on this basis, if you analyze any object of this world, creation, finally it will dwindle into waves, and that will be sound waves. Everything is made up of sounds, waves only. The whole universe is nothing but wavy system. That is called changing system, changing phenomena, or we can go on naming it differently, innumerably, not one or two names. So same thing is named as mind, same thing is known as intellect or ego or action or reaction or cause or effect. Everything is based on the same substratum. Substratum is every system, a changing system. Understood now? So in this way, if we see the reflection in the mirror, that is also a wave system. When the waves are disturbed, then the reflection will not be there. Everywhere the same formula will be activated, will be taken. If you see outside by your eyes, you will see the forms, and then you will think and you will have some names. And if you don't see, if you close your eyes, no forms. If you open your ear, then you will get the sound. If you close your ear, no sound. So in this way, when the process is interrupted or stopped or gone, disappeared, then the result is not there. Result, just as when all the aspects are working, then only we see the reflection in the mirror. If they are disturbed or destroyed, then there is no mirror and no reflection in the mirror. If the mirror is kept, means it is opposite, upset, then there will not, you will not see any reflections, isn't it? So the process, if is interrupted or disturbed or destroyed, then there is no reaction of it, no result of it. The same formula
we should apply when we try to think of the world and the truth. World is nothing but only reflection of the absolute existence. And if you say the truth is one without a second, because it is omniscient, omnipresent, and omnipotent, how can it have reflection? How can it see the process within it? How it is possible? No, it is possible. It is possible. See the example of transparent surfaces or prism, crystal, or anywhere if it is a round or half round mirror, the mirror gets its own reflection within it. And if you are standing or sitting in a room where all the sides up and down, all the sides are not the cement wall or brick wall, but it is lens walls. Whole sides, all the directions are fixed with lenses only. What you will see? Lenses are example for ट्रांसपेरेंसी और रिफ्लेक्टिव क्या कहते हैं उसका सरफेस है सरफेस हाँ सो यू विल सी इन्यूमरेबल reflections of yourself and of the lenses within the lenses. One reflection of the particular one lens will be reflected in the other lens, and that other lens will be reflected in the first lens, and there will be again and again so many innumerable reflections everywhere, everywhere. That is the confusion, that is the cause for confusion, that is how we are seeing this world. And because the Absolute is absolutely transparent, perfection or totality or oneness without the second, that means only same thing, that transparency or perfection or completeness or oneness, they mean same thing. They have got no different meanings. Understood? So, the Absolute, because it is one, it reflects within itself. When, just as you want to see yourself, so what do you see? If I want to see myself, I have to see my parts of the body. I cannot see the whole total body at a glance, or anyhow we cannot see the whole totality. Totality also is an imagination which does exist in all conditions. But totality cannot be seen by process, because process is always interrupted. So totality will be interrupted, so it will be in sequence. Understood now? That's how the absolute transparent existence that appears to itself in different names and forms, different parts, or differently as in a process. That is how the Absolute sees himself. So there will be the question, हम कहाँ रह गए भाई? जब वो absolutely one, that is one without a second. So what is my identity? Where is my existence? How am I and mine? World is nothing but I and mine, isn't it?
If I is not there, mind is not there is no world. And if the world is not there, we don't know what is absolute. When we compare uh, and analyze and contemplate over, discuss over the world, then only we go to the absolute, isn't it? Where from you are approaching, where do you stand? You are standing in illusion only. I means it is part of the world. And what is that I? I is nothing but a limited idea, which is personified with a name and form, and then so it will have a name. So this is called I. It is limited. From limited, we have to go to unlimited, where there is no limitations. Approach is in this way, isn't it? Same I will go. Huh? The same I will Same I will see the absolute. So, when it sees the absolute, from our general day-to-day life we see, when we see something by any of our senses, then we become one with it. When you are hearing some melodious songs, you forget other things. One thing at a time. Our activation, that means our whatever we do, our actions cannot be many at one time. Time, space and conditions are always effective. They are influencing all our activations or our actions. So, we cannot have everything at a time, but one thing at a time. Seeing, hearing or whatever we do, it will be in process, in sequence. Everything cannot be at a time. Understood? Because we are in the process. I means it is a process. I means it is a process. How? I goes on changing. Do you accept it? I changes. The single I changes. And its change is called mind. It has relationship with other other objects what he has relation. So it becomes mine. What I don't know or what my mind cannot think, can I say it is mine? Never. Say that distant mountain, snow peaks I am able to see. So I can claim it is within my vision. My vision. My eyes reach. My mind's reach. It is within the reach, isn't it? My reach. So my is not only my book or my specs. Everything, wherever your mind goes, it is yours. नेपोलियन कभी कहा था ना, मेरे वो काला पानी दिए थे नेपोलियन को और वो क्या बोला था, वो टापू में दुनिया में और कुछ नहीं, अकेला हुआ वो काला टापू में, काला पानी पनिशमेंट। तो वो बड़ा सुंदर अपना एक्सप्रेशन बताया कि मेरा आँख, मैं तो एम्परर ऑफ एम्परर्स, बिकॉज वेयर एवर माई आईज गो I am the emperor of all these because there is no obstruction. जब मैं
लड़ाई कर रहा था और दिग्विजय करने के लिए निकला था, वहाँ तो अपोजिशन था, यहाँ नो अपोजिशन। आई एम द एम्परर ऑफ माई सेल्फ, wherever my goes, my eyes reach, I am the king of all that. No opposition, no interruptions. नेपोलियन खाली एक वॉरियर नहीं था, फिलोसोफर भी था। जैसे भी होगा, हमारा विषय यही है कि दृश्य कैसे खत्म होता है, जाता कहाँ, और दृश्य बनता कैसे, यही हमारा पॉइंट है। हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट्स, इन व्हाट वे वी हैव contact with the object, and if we don't have any contact, where does it go, and what happens to all those? So all these examples we have discussed, just like a reflection, or just like some visions by our senses, or lens house, or round mirror, or presence of mirror and absence of mirror. All these examples we have discussed only to clarify where do the vision goes. Where does it go? If we don't see the world, does it really vanish? This is the question. Here is the doubt. मैं आंख बंद कर दूंगा, क्या दुनिया खत्म हो जाएगा? वो सवाल हम दूसरे तरीके से पूछते हैं, क्या मेरे को आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगा? दूसरे तरीके से यही सवाल उठता है। ज्ञानियों को ज्ञान हो गया, हाँ, हम ब्रह्मास्मि हो गए, तो क्या दुनिया सब ब्रह्म बन गया? इसके ऊपर हम बहुत डिस्कशन किए भी। दुनिया है ही नहीं जिसको हम कहते हैं है करके, और वो जैसे रिफ्लेक्शन नहीं है उसको हम मान लेते हैं, वैसे ही दुनिया नहीं है उसको हम मान रखें। तो मानो तो है, मानो न मानो हम तेरा मेहमान। मानने से मेहमान, नहीं मानने से कोई पागल। तो मानने के ऊपर बात है, उसी को कहते हैं दृष्टि सृष्टि। मान लिया तो दुनिया मान लिया। मानना मतलब बाय द सेंसेस, बाय द माइंड, दे आर द एजेंसीज who accept this is like this, isn't it? Including our subconscious mind, ego, intellect, mind, senses, everything. And time, space and conditions, situations. Everything together, they create this world, visible, our so-called real world. When all these are withdrawn, they are not there, where is the world? So, on the other hand, we can say, these are the world. Mind is the world. It has created world, or mind is world itself. When you see your body, what do you think? I see my hand. Do I think hand is different from me? Can you think so? My hand means I hand. That's how we behave. Huh? My hand means I hand. It is not my, it is I. That is how. Mataji, what's your name? Anand. Can you stand up? Who stood up? Who stood up? That is what we always give the example. Who stood up? The body
or the leg or the name? What are you? I. Name is I, body is I, and the leg also is I. Everything is I. You identify I with every part of it. Then only we can do something relatively. Absolutely, all these I never moves. It is constant, it cannot act. There is no action reaction. There is no cause and effect. There is nothing, we can think nothing about it. It is beyond everything. So, relatively, all these take place confusively, illusively, totally, or partially. There is no particular law or anything. As we are habituated, so we see the world. What is repeated again and again, so the world is. Say, some strange person came to you, all of a sudden. You don't know anything about him. And he went on staying with you for years. So how do you see him? You are a member of the family, your friend, your own person. You cannot say he is a stranger now. So continuity or repetition is the cause for our vision, our acceptance, what we know or we uh, understand. That is because of habit. Habit means repetition. Repetition of thoughts or Everything, actions? everything, everything. Everything. Ah. Mind will be repeated, thoughts will be repeated, vision will be repeated, contact will be repeated. So that becomes something for us. And that is how we have created this world around us, our kith and kins, our relations, our contacts, by repetition. Some imagination, if it is repeated again and again continuously for some long time, then it appears to be true. How many years? Another, there is no limit. There is no how many years. See, you try to try to investigate, try to experiment. If you go on telling a lie again and again continuously, that appears to you as a truth. Correct. Huh? See, say somebody asked me, Swamiji, where do you live? I say, I am living in Ganeshpur village. Is it true? Am I living in Ganeshpur village? Shivananda. Huh? Where do I live? Ashram. Shivananda Ashram. Am I fixed on one point so that I can call my room is that, or my house is that, or my ashram is that? Am I unmovable? Do I not move? So all these are taken for granted totally. I am living in Ganeshpur. Because it is repeated again and again and accepted, not by only you, by everyone. And truly speaking, when we analyze ourselves, whatever we see, whatever you think, whatever you do, everything is wrong or everything is false. If you analyze correctly, logically, from every angle, then
I or you or we. This identity is nothing but a totality of falsehood. This is the final conclusion. So in this way, according to the great seers, they say the world is nothing. No, it is not existing at all. And you will also, I will also, everyone will experience it if it is repeated again and again, analytically and logically from every angle. If you go on, repeat it, then it will be a concrete truth, solid truth. And this is how we have created this. And the opposite will be absence of it. This is what we have to see. यही वो कह रहा है कि दृष्टि को हटा लो। दृष्टि को हटा देना मतलब ये सारे जो इतना हम विचार किए हैं, ये सारा दृष्टि के अंदर है। दृष्टि को हटा लेने से सृष्टि खत्म। दृष्टि मतलब सोचना भी है, सब कुछ इसके अंदर आएगा दृष्टि के अंदर। तो इस ढंग से सृष्टि को हम लय कर सकते हैं। सृष्टि नहीं है और सृष्टि हमने बनाया। मैंने बनाया सृष्टि, मेरा दुनिया। मैं जो सोचता हूँ, मैं जिस ढंग से सृष्टि को देखता हूँ, क्या आप उसे ही देखते हो? कभी नहीं हो सकता। आज आई सी दिस वर्ल्ड, डू यू सी दिस वर्ल्ड सिमिलरली इन माई वे? No two visions are equal. Your world is different than my world. And some similarity will be there because we are same as human beings. But the world of the plants, animals, or birds, or insects, or other objects, they are different from each other. I am telling something, you are understanding, that means communication is made. So can you talk to some stone? And can the stone hear you and reply you? No. Can you talk to a wild animal? Of course, domestic animals, we have made them trained. If you call the puppy, come on, so it will understand, isn't it? But it is not same everywhere. Not same everywhere. Everybody has every identity has its own world different from others. So as you like, if you want to see the world, it is for you. You see it. And if you don't want to see it, withdraw it. And on this basis, you cannot claim because I have withdrawn my world, so other worlds will be withdrawn. You cannot claim this. So others' worlds will be that way for them. Okay? Because every I has created this world, mine. And according to my concept, the world appears to me. उसके बाद स्वभाव को छोड़कर, यानी सब जड़ वस्तुओं में अनुगत जड़ता रूप मूल अविद्या को छोड़कर जितने नाम रूपात्मक पदार्थ हैं, उन सभी के प्रति वह मूल अविद्या ही कारण है, परंतु मूल अविद्या का जो साक्षी रूप से कारण है, और गहराई में हम जा रहे हैं, साक्षी रूप से जो कारण है,
उसका अनुभव करना यानी अपने में तद्रूपता का अनुसंधान करना ही मुक्ति है। मुक्ति मतलब सृष्टि का खत्म, ये तो मुक्ति है। सृष्टि के कारण हम उसमें बंधे हुए हैं। मेरा सृष्टि मैं हूँ, यही तो बंधन है। अब मुक्ति क्या है? ना मैं हूँ ना मेरा है। मैं हूँगा तो मेरा है, और मेरा नहीं या मेरा नहीं है तो मैं नहीं रहूँगा। मैं नहीं हूँ तो मेरा नहीं रहेगा। तो इन दोनों का जो समाप्ति, इसको कहते हैं मुक्ति। मैं मेरा के साथ बंधा हुआ हूँ, है कि नहीं? मैं और मेरा शरीर, मेरा आँख कान नाक सब कुछ मेरा है, मैं बंधा हुआ हूँ। तभी तो मैं बना हूँ एक टोटल बॉडी। तो इसको मेरा नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा तो मेरा नहीं रहेगा। ये दोनों का आपस में संबंध को हम बंधन कहते हैं। मैं और मेरा, यही है दुनिया। अगर मैं और मेरा नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं। तो इसको विश्लेषण करना, अनुसंधान करना, इसी का नाम। और अनुसंधान करेंगे, विश्लेषण करेंगे, विचार करेंगे तो इसका फलस्वरूप हमको क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगा। ये सब है ही नहीं और इसमें बंधे हुए हैं। इसके ऊपर उदाहरण देते हैं, कंबल मुझे छोड़ता नहीं या भालू मुझे छोड़ता नहीं। ये उदाहरण है। दोनों को पकड़ रखे हैं, दोनों को, वाइस वर्सा। If I have been entangled with my also has been tied up with I. So both way. And that's how you are in bondage, you are tied up. और माई मीन्स नेचर, स्वभाव, उसको अभी विचार किए हैं। और अभी दूसरा वही कहा, स्वभाव जो छोड़ कर गया, यानी सब जड़ वस्तुओं से वस्तुओं में अनुगत जड़ता रूप मूल अविद्या। ये जो स्वभाव है, स्वभाव का भी विचार करते हैं हम, करेंगे। तो इसको अगर छोड़ दिया तो उसी को कहते हैं मूल अविद्या। भी उसको छोड़ देने से नाम रूप भी हट जाएगा, मैं मेरा भी हट जाएगा, दुनिया खत्म। उसी को कहता है मुक्ति। मैं और मेरा में टाई हो रखा है। ये हो रखा है क्या? क्या हम बॉन्ड साइन कर देते हैं, बॉन्ड साइन हुआ, यू आर बाउंड, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड साइन। तो अभी क्या वो कर रहा है? स्वभाव का छोड़कर। ये स्वभाव क्या है? स्वभाव, इसका आक्षरिक अर्थ अपना ही जो भाव को हम प्रकट करते हैं, अपने भाव को देखना, अनुभव करना और प्रकट करना, उसको कहते हैं स्वभाव। मैं कौन हूँ? वो मैं का रिपीटेशन में स्वभाव हो जाता है और वो माई बन जाता है, मेरा बन जाता है। फिर मैं अगर बारंबारता के कारण स्थूल होगा तो वही, उसी को कहते हैं हम मेरा, और उसी को कहते हैं स्वभाव। मेरा ही मेरा स्वभाव है। तो इसके उदाहरण के रूप, जैसे मान लो अग्नि है, अग्नि का स्वभाव क्या होगा? जैसे हम देख रहे हैं उसका वो स्वभाव है। वो अग्नि को हम कैसे जानते हैं? एक आलोक के रूप में, एक उत्ताप के रूप में, एक ऊर्ध्वगति के रूप में, बहुत रूप से हम देखते हैं। जलनशीलता, ज्वलनशीलता, तो भाव नेचर है या फीलिंग से? ये फीलिंग, नेचर सबको भाव कहते हैं। अच्छा। वस्तु का भाव, उसी को हमारा आयुर्वेदिक शास्त्र में कहते हैं वस्तु गुण। वस्तु गुण, क्वालिटी। भाव मतलब क्वालिटी, एक्सप्रेशन और इट्स सिचुएशन, वेयर इट इज, हाउ इट इज,
what it is, when it is. All these answers to all these questions are called qualities or nature. ये Who ये am I? ये How am I? Where am I? When am I? Why am I? Whom am I? All these questions should be answered analytically. ये ईगो का ही है बाप। ईगो का ही मानो, मन का मानो, प्रकृति का मानो, स्वभाव का मानो, जो कुछ भी जैसे मानना मानो, स्थिति ऐसी ही है। ये भगवान का भाव नहीं है। भगवान का क्यों नहीं होगा? उसके बिना तो और कोई है ही नहीं। तो यही तो बात हमारा था, हम कहाँ खड़े हैं, हम कौन सा खेती के मूली, हम उसी के अंदर हैं। वो अगर मान लिया तो हम खत्म हो जाएगा, वो रह जाएगा। यही तो करना है। ये मैं और मेरा, ये हमको बांध दिया है। मैं मेरा खत्म हो गया तो वो रहेगा। जी, वो रहेगा। There is a law in physics. If two forces clash against each other, what happens? What is the resultant force? It will have a diagonal force. The third force will be its result. The whole world is based on this. Only thing we have to apply and see it, how it is working. मैं और मेरा अगर लड़ाई करके ख़त्म हो गए, दोनों ख़त्म होंगे, तो वो रहेगा। वो है थर्ड फोर्स। नहीं तो वो फास्ट फोर्स, जैसे मैं हाथ को रगड़ूंगा तो कुछ निकलता नहीं है। घर्षण का क्या होता है रिजल्ट? इफ टू थिंग्स दे clash against each other, the heat is generated, isn't it? Friction. So, if I want to see myself, I and my, there is clash. So, result is repeatedly, if it is struggling with each other or fighting with each other or relating with each other, so the result is this world. Diagonal force, third force. How it is? I want to see myself. This is, the result is body. Okay, I want to see myself. This is applicable on absolute also. When he wants to see himself, we are not there. So he wants to see himself, then the nature, I want to see myself, that is called nature, स्वभाव, और उसी के अंदर हम सब हैं। मेरा स्थिति को मैं मानूंगा, सोचूंगा, देखूंगा और इसको गवेषणा करूंगा तो मेरा स्थिति उसी के अंदर आता है, क्योंकि उसके बिना कोई नहीं है। समझे? एक रह सकता है, दो नहीं रह सकते हैं। क्यों? दो क्यों नहीं रह सकते हैं? लॉजिकली देयर कैनॉट बी टू। लॉजिकली how do you get 2 digit in mathematics? Can you get the 2 without 1? Huh? Can you get 2 without 1? No. Go anywhere in this world, wherever you can. Can you get 2 objects or 2 subjects or 2 forms or 2 names or anything 2 without 1? Digits also, mathematics. 1 has to be there and 1 is first. So when 1 is there, others are its product. 1 plus 1 is 2, 1 plus 1 plus 1 is 3.
So it is a common factor which is present everywhere in all the digits. है कि नहीं? So one has to be there in the beginning. On this basis it is said, he was in the beginning. One was in the beginning. इसको छोड़ के क्या कहाँ जा सकते हो? तो जाओ देखूं मैं। कहाँ जाओगे? एक के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए इदम आसित अग्रे, यही था पहले, सबसे पहले। आदि देव, आदि बीज, आदि भूत, सब कुछ के पहले वही रहेगा। ही इज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। ही इज द स्टार्टिंग and he is one. So if he is one, there is no possibility of two. Two is repetition of one. So two is within the one, and one is within two. This is how we do in mathematics. Isn't it? One is a factor of two, and two is seen in one when it is one is repeated two outcomes. So two is nature of the one. समझे? तो all these multiples are nature of one, the absolute one. अब स्वभाव आया समझ में? मैथमेटिकली एक पेड़ देखते हो तो एक पेड़, एक शरीर देखते हो, कुछ भी हमें एक दिखते हैं, उसके अंदर अनेकता छिपा हुआ है। हम देखना चाहेंगे तो अनेक को एक के बाद एक देखेंगे, नहीं तो पूरा को नहीं देख सकते। देखना है तो अनुभव करना, तो अनुभव कर सकते हैं। देखना मतलब इट इज ए मॉडिफिकेशन, समझे? इट इज ए प्रोसेस, सो इट इज मेनी। इफ देर इज नो प्रोसेस, इट इज absolutely one. Everything starts from one. Process also starts from one. Steadiness, one equilibrium state. Then only when it vibrates, it becomes many. Imbalance becomes many. Isn't it? Can you see the water without qualities? When you see, that is called, you see its nature, its properties, its qualities. इसीलिए हम दुनिया को जो देखते हैं उसी को दृष्टि जगत उसका स्वभाव कहा गया। ऐसे सब जगह पर, एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल। आवर नेचर इज सीन बाय आवर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड नेचर। पानी कैसा है? पानी को कैसा देखते हो? वेवरी है। Water is blue, water is pure, or water is impure, water is in flow, or it is stagnant. All these are its quality. Without quality you cannot see it. How you see it, that vision is according to the quality of the object. समझे? पेड़ को देखते हैं, पेड़ का गुण को नहीं देखने से यह हरा है, ऐसा है, शाखा है, प्रशाखा है, उसका ऊपर को बढ़ता है, ऊपर को जाता है, या हवा से हलता है, ये सब सारे उसका स्वभाव है। स्वभाव को देखने से वस्तु के बारे में कुछ अनुभव होता है। तो इसी को वो कहा, स्वभाव को छोड़कर, यानी सब जड़ वस्तुओं में अनुगत जड़ भाव स्वरूप मूल अविद्या। ये जो हम स्वभाव को देखते हैं इसको कहते हैं अविद्या। अविद्या किसको कहेंगे? अविद्या को हम अनेक ढंग से देखना चाहिए। अनेक ढंग से कैसा? फ्रॉम ऑल एंगल। व्हाट इज कॉल्ड इग्नोरेंस, व्हाट इज कॉल्ड illusion, where there is no clarity. How do you define, or how do you understand what is clarity?
or perfection? How do you know it? How do you define it? What is called clarity? When there is no dualism or Where there is no dualism, that will be clear. clear, yeah. That is called clarity. Or else it is a mixture, then it is confusion. Yes. What is how? All these questions come. How much is mixture? How much percentage, or in what way? All these questions come. That creates the confusion. If two is there, there is confusion. One is there means no confusion. There is no question over one. If two are there, then starts doubting and questioning and answering and all these multiple process starts, and that is called relationship, and that is called nature. If two comes, it will have relationship with it by automatically, and relationship, comparison and qualities, then only we see the qualities. If one is there, it is neither big nor small nor fat nor thin, nothing is there, no quality. If two starts appearing, then it is greater than this. Comparatively we see everything. It is thicker than this, or smaller than this, or bigger than this, or stronger than this, or weaker than this. All these comparisons because of relationship and contact with each other. That's how all the confusion is there, has to be there. You cannot avoid it. This is called nature. And it is not a steadiness, it is a process. So all the confusion starts. And when all these nature is control or it is not working, no, nature is there. Without nature, the object or subject or whatever the existence, that has got no qualities, no confusion, no illusion, no manyness, nothing is there. No names, no forms, no time, no space, no conditions, nothing is there, because it is absolutely one. The problem is that we cannot speak, we have to be in silence. That is called absolute silence. That is called absolute balanced state samatha. That is called absolute perfection. That is called absolute clarity, existence, knowledge, and satisfaction, bliss, contentment, equanimity. All these are absolutely found in that one only. Nature अभी समझ गए हम. We have understood what is nature somehow. इसको 50 बार बात करेंगे तभी दिमाग में बैठता है. इसके अंदर अंदर घुसना पड़ता है. बार बार विचार करने से तभी जाकर सफाई आता है सामने. दिन रात अहोरात्रम संदधामी, लगे रहना इंडिया, छोड़ना नहीं. तभी जाकर थोड़ा क्लैरिटी आएगा, और जब सब खत्म हो जाएगा सब पूरा क्लैरिटी, पूरा क्लियर. हाँ, तो इसका जो जड़ता का जो जड़ रूपता है, जड़ का जो जड़ रूपता है, उसका स्वभाव है जड़ रूपता. जैसे जड़ को हम जड़ क्यों कहते हैं, उसका स्वभाव को देख करके. अग्नि का नाम और रूप को बिना देखे हम अग्नि नहीं कह सकते हैं. तो नाम रूप उसका स्वभाव हुआ. तो किसको हम जड़ कहेंगे, उसमें उसका स्वभाव क्या है, जड़ता है. स्वभाव मतलब जड़ता. ये स्वभाव जो है उसी को बोलते हैं हम मूल प्रकृति. और वो क्या कैसे होता है, मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका है. त्रिगुणात्मिका, वो जो बदलाव उसमें जो आता है, मतलब जो विषमता पैदा होता है उसमें कम ज़्यादा, इसीलिए तो विषमता आया. 3 होने से विषमता अपने आप आ जाएगा. 1 होगा तो विषमता नहीं.
है लॉजिकली। तो 3 गुण हुआ तभी समता होना है। और 3 गुण अगर 3 रूप से हम देखते हैं उसको, तो उसको 3 गुण मानिए। और वो मूल कारण है हमारे सारे कन्फ्यूजन, इल्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग। इसी को हम अविद्या कहते हैं। मूल अविद्या, मूल कारण यह है अज्ञान, ना समझी। यह सारे कारण है, सारे दुनिया का कारण है। समझ जाएंगे तो कुछ नहीं। हमारे दोस्ती, हमारे दुश्मनी, हमारे मेरापना, मेरा परिवार, मेरा दोस्त, मेरा देश, मेरा गांव, मेरा सब कुछ मेरा है और मैं, ये कौन कह रहा है? मन कह रहा है ना, अहंकार कह रहा है ना। इसको अगर समझ जाएंगे आगे तो ये कुछ नहीं रहेगा। समझ ही सबका कारण, अज्ञान ही सारे दुख का कारण। इसी के ऊपर कहा गया अज्ञान क्यों दुख का कारण। वाई इग्नोरेंस इज द कॉज फॉर ऑल द मिजरीज। Misery start because of misunderstanding. When we understand, that means we are one with the object, and that means there is no misunderstanding. That is called knowledge. When you are one with the object, then you have no doubts at all. So no problem. Problem is because of doubt. How it is, what it is, when it is, why it is, where from it is. All these are cause for our miseries, our questions and confusion. Other example, when you are unable to see the rope, you have all the miseries. You are afraid of it. You are bewildered by it. All the fear of that, all the bewilderedness, because of misunderstanding, you are not able to see. It is a rope. You have taken it as a snake. So all the miseries, all your problems start because of non-clarity, misunderstanding, or this is called ignorance. समझे? If you see it clearly, if you are one with it perfectly, then there is no misery, there is no problem, there is no doubt, nothing is there. So, avidya, ignorance is the cause for our problems, miseries and all these. So, this ignorance is rooted in misunderstanding or the nature of the object what we see. Nature is not the reality. Nature, relationship and adjectives, all those adjectives, that's called nature. And it is because of dualism. If one is there, everything is clear, no problem. If two is there, problem. Two means there starts its nature, qualities, all the adjectives. So, finally it is said from one angle of vision, world is nothing but the adjective of the truth. So, nature of the truth. Of what? Nature means the holder of the nature should be there. Then only it will be nature. What is your nature? That means characteristics. स्वभाव जिसको हम कह रहे हैं. So, someone will be there which will have its nature, isn't it? That we call matter or object or anything, as you name it. So, if you see the whole creation as something, then it is the nature of the Absolute One. So how to, because of this, all our problems, miseries, and all our doubts, everything. And when all these are clearly understood and you have no process, you are not all these nature,
You are not in the nature, you are not the nature, you are absolute one, then all the problems are ended. हो गया? तो ये कह रहे हैं ये जो जड़ता इसी को कहते हैं, जो जड़ में जो जड़ता है उसका स्वभाव उसको कहते हैं। ये मूल अविद्या है। अविद्या के कारण मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, ना समझी के कारण हम उसका जड़ता रूपी स्वभाव को जड़ में देखते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं वो चीज़ क्या है। इसलिए उसका जो हम रस्सी को नहीं देखे तो स्वाभाविक हम और कुछ समझेंगे उसको, और जो कहते हैं उसको स्वभाव को हम देखेंगे। वो स्वभाव क्या हुआ रस्सी का? वो टेढ़ा मेढ़ा है और लंबा है। वो जैसे है उसका स्वभाव को देख करके हम और कुछ सोच लेते हैं, है कि नहीं? इसीलिए जड़ता में, जड़ में जो जड़ता को हम देखते हैं उसको स्वभाव मानना। वो किस लिए है, क्यों है? अविद्या के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, ना समझी के कारण, क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, इसीलिए इसी को अज्ञान कहते हैं, इसको अविद्या कहते हैं। इसको अगर छोड़ देंगे, जितने सब नाम रूप पदार्थ का है दुनिया में, दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ नाम रूपों का समष्टि है। एक एंगल से, दूसरे ढंग से कार्य और कार्य प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया, इसका नाम दुनिया है। नहीं तो दूसरे ढंग से हम देखेंगे तो कार्य और कारण, नहीं तो त्रिपुटी के रूप में देख सकते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, तीन रूप से हम देख सकते हैं दुनिया को। जिस ढंग से हम देखेंगे उसको अगर हम जो देख रहे हैं वो पदार्थ का नाम रूप के अनुसार ही हम देखेंगे, उसका नाम रूप जरूर होगा। कोई वस्तु को बिना नाम से, बिना रूप से हम उसको उसके साथ हमारा कांटेक्ट नहीं हो सकता। विदाउट एनी नेम और फॉर्म we cannot have any contact, because mind is always dependent upon this. Mind is dependent or supported by name and forms, or else it cannot comprehend anything. So mind is root cause of visions, whatever we see. Now the whole world is based upon names and forms. Suppose you went to the bazaar, market, and you have brought something, you have purchased something. Can you purchase something which has got no name, no form? Can you? Okay, I will tell, please bring me kuchandram from bazaar, or nothing from bazaar, or emptiness from bazaar. Can you bring? So it should have some support. Name and forms are support for the relationship or transactions. That is called world. Relationship, contact or transactions depends upon name and form. Without form there is no name, without name and form there is no contact. It is not possible. So what happens? We came to the conclusion, this misunderstanding which is based upon names and forms of the world, which is the nature of the truth, that creates the misunderstanding or confusion, and that is the cause for all our bondage, all our miseries,
everything. So, what is the consequence? What is the result out of it? ये जो अविद्या हुआ, उसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? What is the cause for this misunderstanding? That cause, the root cause should be understood, then only we can root out it, isn't it? So what is the cause for misunderstanding all these problems? What is cause? Body. Huh? Body. Of course, from some angle we can say body, but misunderstanding. Why do we misunderstand? अब भी बोले ना, क्योंकि सफाई नहीं, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि मिक्सचर है, अडल्टरेशन, इम्प्यूरिटी, और प्यूरिटी मीन्स वननेस, इम्प्यूरिटी मीन्स मिक्सचर. The whole world is mixture only. Mixture of what? We may say some elements, basic elements we take philosophically as 5. The sky, air, fire, water and earth. These are basic gross elements. By mixture of all these in different races, in different portion, differently, all these names and forms are formed. They have become gross. So because gross and subtle have been mixed up. So the root cause, where is the mixture? Because of mixture, we are bewildered, we are not clear. So if it will not be mixed with each other, mixture means many. Huh? Purity means one, isn't it? Yeah, it is. There is milk is not pure. That means some mixture is there. Some second object is added into it. So oneness means purity. Mixture means impurity, which is cause for misunderstanding. What it is, how it is, what is the portion, what is the condition, in what condition, in what proportion, how it is mixed up, पंचीकरण जो आता है, उसी के कारण ये दुनिया बना. तो उसका मूल कारण है मिक्सचर. मिल गया करके हमको क्लैरिटी नहीं. तो एक में अगर चले जाएंगे, मूल कारण उसी का, ये पंचों का जो एक कारण होगा, तो फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, अविद्या नहीं रहेगा, तो फिर हमारा सारे समस्या खत्म, दुनिया ही नहीं रहेगा. When you give up this mixture and come to one absolute purity, इसीलिए तो भगवान सत्य को बोला गया कि निरंजन, अंजन नहीं, निष्कलंक, निष्कल, ये शब्दों से इसीलिए कहा गया, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है. So when you come to the mixture, you are bewildered, you are misunderstood, and there is all the problems. When you go to one which is somehow indirect cause, it cannot be, one cannot be cause for many, but because we are seeing the many, so without one we cannot see many. So somehow we have to take it for granted that one is the cause for many. And if you give up the many, then one will remain, isn't it? So ये सब का जो आलोचना हम कर रहे हैं, इससे निष्कर्ष यही निकलता है, अविद्या का मूल रूप से नाश तभी होगा
जब क्लैरिटी होगा, जब संदेह नहीं रहेगा, शंका नहीं रहेगा, एक रह जाएगा, और उसका स्वभाव के कारण हम अनेकता देखते हैं, स्वभाव को छोड़ देंगे और मूल को देखेंगे, मूल प्रकृति को छोड़ के मूल को देखेंगे, और उसके साथ एक हो जाने से अनेकता खत्म, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तब जो हम दुनिया कहते हैं, जिसको स्वभाव कहा गया, जिसको मिक्सचर कहा गया, इम्प्योर कहा गया, जो हमेशा बदलाव के रूप में दिखता है, क्योंकि मिक्सचर होगा तो बदलेगा, बदलाव के कारण तो मिक्सचर हुआ, तो वो स्वभाव चलते रहेगा। तो इसको अगर हम छोड़ सकते हैं तो उसी का नाम है मुक्ति। If you can withdraw from all these, whatever we have seen, from one cause the effect is something else, from one effect that effect becomes the cause for another effect. We have seen everything, because one is not seen or not observed, that's why we see the two. And two means there is many, and that is called its nature. Nature is cause for misunderstanding. Misunderstanding is cause for miseries and bondage. So if you want to be free of the bondage, then you have to go in the same way back to the source. इसी को कहते हैं मुक्ति. And the source you don't have to go. It is all pervading, ever present. Simply you have to say or think or accept or experience, I am that. Then only all the problems are over. I am not this, I am that. तो उसी को हम परसों नरसों कर रहे थे, पुण्य से पुण्यमादाय. आई मीन्स इदम, और वो दैट. देयर इज ओनली टू, आइदर आई और ही, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन, नहीं फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन one, first person has made because of relationship. He is not related, he is third person. Either he is third person or I am third person. Vice versa is possible. तो इस ढंग से जब हम विचार In this करते हैं, case, power of discrimination is important or devotion is important? devotion is discrimination. Is it? Yes. मेरे को पूछने से मैं कोई सीधा उत्तर थोड़ी दूंगा. शंकराचार्य जी को तो ये है ना, आत्मसंधान भक्ति पूछ रहे, और क्या तो वही किए. भक्ति मतलब क्या? भजन करना. भजन करना मतलब रिपीटेडली एक चीज को सोचना, वही तो. डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है. क्यों नहीं होगा? दो नहीं है, एक है. एक चीज को सोचना, वही तो भक्ति कहते हैं. We decided. हाँ? We decided to. You have to decide. Yes. That is called bhakti. Then Two only- becomes one. That is called bhakti, devotion. And same thing we get in discrimination or in contemplation or by avoiding ego, I-ness. Do whatever or stop the mind's actions. Any way you go, you reach the same thing. There is no difference between all these yogas or yes. Why? Because the goal is one. Processes are many. Tomorrow we shall see further. For today, this much. अभी हम क्या क्या समझे? स्वभाव को समझे, जड़ का स्वभाव जड़ता को समझे, और अविद्या को समझे,
और नाम रूप को समझे, नाम रूप को और भी एनालाइज कर सकते हैं। नाम कैसा बनता है और रूप कैसा बनता है, रूप बना कैसा। अभी थोड़ा बस विचार, सटल इफ रिपीटेड देन इट बिकम्स ग्रॉस। ग्रॉस मीन्स विजिबल ऑब्जेक्ट। अभी विचार किया था, जब किसी चीज़ को आप एनालाइज करेंगे आखिर वेव्स में बदल जाता है, साउंड वेव्स। wave, the whole system is wavery system. So if wave is analyzed properly, then there is no wave, there is only substratum. Wave of the water is not different from the water. So in this way, if you go on analyzing, absolutely remains the absolute. This is how we have to contemplate. तो फिर आखिर में क्या होगा, अनुभव यह आ जाएगा। तो सदरूपता का अनुसंधान करना जो मिक्सचर में इम्प्योर हुआ कैसा। इसीलिए तो सब लोग हमारे साधना प्रोसेस को तो यही लोग तो बोलते हैं, ये शुद्धिकरण। शुद्धिकरण, शुद्ध से शुद्ध, साधना, शुद्धि, ये सब शब्द बना। शुद्ध मतलब वननेस, प्यूरिटी। तो शुद्धिकरण साधना मतलब हम ये अनेकता को छोड़ के एकता के प्रति अग्रसर हो रहे हैं, इसी को कहते हैं साधना। साधना मतलब साधना, दूसरे अर्थ में बोलते हैं मैं उसको साध रहा हूँ, मतलब उसको मेरे साथ मिला रहा हूँ, उसको साध रहा हूँ। परसुएडिंग एंड टू बी वन विथ इट, either opinion wise or action wise और एनी वे। साधना मतलब उसको मैं साध रहा हूँ। साधना मतलब टू बी वन, नॉट द प्रोसेस, नॉट द रिलेशनशिप, नो ट्रांजैक्शन, बट वननेस। उसी को कहते हैं प्यूरिटी। शुद्ध करना को साधना कहते हैं। अनेकता को निवारण करने के लिए साधना करते हैं, एकता को साधना करते हैं। इस रूप से हम अनुसंधान करने, अनुसंधान शब्द भी उसी से सद धातु से उसके प्रति जानना, सत्य के प्रति जानना, अनुसंधान, पीछे जानना, उसको लक्ष्य रख करके उसी रास्ता में चलना, अनुसंधान। इसी को कहते हैं मुक्ति। तो इसको फिर कल विचार करेंगे आगे। परमार्थ में तो किसी पदार्थ, अच्छा, एक परमार्थ और एक व्यवहारिक अर्थ, एक परमार्थ एक व्यवहार अर्थ। इसमें क्या डिफरेंस कल विचार करेंगे। एकता क्या द्वैत को छोड़ करके रह सकता है, या दो क्या एक को छोड़ कर रह सकता है। इनके आपस में संबंध क्या, थोड़ा तो हम विचार कर लिया है, जैसे वस्तु और उसका प्रतिबिंब है कि नहीं। संबंध क्या है इसका, उसका क्या संबंध, क्यों ये होता है, थोड़ा बहुत तो विचार किया, कल विचार करेंगे इसको। व्हाट इज द रिलेशनशिप, एंड बिकॉज ऑफ relationship, how we have transactions, daily life, take something, give something, action and reaction, है कि नहीं। ये तो दुनिया है। और अगर ये नहीं रहेगा तो where there is no transaction, no relationship, then what happens, संबंध कैसा बनता है और किसके साथ किसका बनेगा, इसको सब कल विचार करेंगे। ये सारा प्रकृति का नियम है। सब जितना विचार हम गहराई से करेंगे उतना ये खुलता रहता है। इसको हेडेक नहीं मारना। हरि ओम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जगत श्री जी भगवान की जय। हरि